Good morning, students. Today we shall start the second chapter in political science. This is one party dominance, era of one party dominance, and this one party is Indian National Congress. We'll talk about the elections soon after independence, how they took place. As you know, after independence, there were many problems. The initial problem was the integration of princely states into the Indian Union. That was a big problem, and many princely states they became part of India, but some bigger princely states they posed problem. Junagadh, Hyderabad, Kashmir, and all they remained a problem. Okay. Even after independence, we saw 15th August 1947, Hyderabad was still not part of India, Kashmir was not still part of India. There were other areas which were under the control of France, some of the areas were under the control of Portugal. So, the India that we know today, even Manipur had not assimilated into India. So, the India we know today didn't exist on that day of 15th August 1947. There was violence, that was another problem. But then things began to settle down, and in 1950 we know that Constitution came into effect in 26 January 1950. There are three dates that you need to know. Constitution come adopt, that is 26th November 1949. When the Constitution was signed, this was 24th January 1950, when the Constitution makers, the members of the Constituent Assembly, those who had made this Constitution, they signed on the Constitution. And then 26 January, जब से वो लागू हुआ, came into effect. After the Constitution coming into effect, तब तक 1947 से लेकर 1950 तक there was a government which is known as the interim government, because government couldn't be formed without elections, and elections कैसे होंगे ये तभी पता चलेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा. So तब तक के लिए there was an interim government which was headed by Jawaharlal Nehru. He was the Prime Minister, and Deputy Prime Minister and the Home Minister was Sardar Patel, who was responsible for the integration of India. ये होम मिनिस्टर भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो ये उनका काम था, एंड उन्होंने स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया था. जवाहरलाल नेहरू was the prime minister and also the head of the party, the leading party, Congress. After the constitution, soon after the constitution was adopted, Election Commission of India was set up in January 1950. Election Commission set up हो गया, okay. And Election Commission was set up in 1950. The first Election Commission, January 1950 में Election Commission बन गया. Sukumar Sen became the first Chief Election Commissioner. उस समय जो Election Commission था, that was one member body. उसमें एक appointment होता था, that is this Chief Election Commissioner. After that, बाद में amendment उसमें हुआ है, and today we see that there are 3 election commissioners, जिसमें से एक chief election commissioner होता है, उसके साथ और 2 election commissioner होते हैं. So now this election commission is a 3-member body, but at that time it was a single-member body. TN session के समय में थोड़ा problem हुआ, and उसके बाद से फिर इसको 3 election commission body कर दिया गया. Okay. इलेक्शन कमीशन बना 1950 में, सुकुमार फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, एंड तैयारी शुरू हो गई. इट वाज लाइक 1950 में हमारा पहला इलेक्शन हो जाएगा. दैट इज व्हाट पीपल वर थिंकिंग, बट देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर टू कम while conducting the first election in a country like India. These are few challenges that we were about to face. 17 crore eligible voters, not just 1 lakh or 1 crore voters. There were 17 crore voters all over India जो eligible थे votes डालने के लिए. Only 15% of these voters were literate. So 85% of the voters were illiterate. Okay. Elections were postponed twice. Reason being delimitation exercise नहीं हो
आया था। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन रहे थे। सो ड्राइंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें काफ़ी टाइम लगा। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, एंड इसमें डिटेल देखते हैं क्या है। बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies. It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. जब तक ये सब तैयार नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं करा सकते, which was taking time. उधर इंटरिम गवर्नमेंट काफ़ी समय से बनी हुई है और एक स्थायी सरकार के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शंस हों। बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स वाज पब्लिश्ड, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आया, दैट इज 40 लाख विमेन के जो नेम्स थे वो मिसिंग थे। ओके, दे वर मेंशन्ड एज वाइफ ऑफ समवन और डॉटर्स ऑफ समवन, द एक्चुअल नेम ऑफ द विमेन वोटर वाज मिसिंग। Election Commission refused to accept such a electoral roll, and आ गया या फिर delete करो या फिर इनके names get the real names. Okay. So preparing for the first general election was a mammoth exercise. No election on this scale had ever been conducted in the world before. इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज बने, ऑल दोज डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो यूरोपियन कंट्रीज थे, एंड वहाँ बहुत पहले इंडिपेंडेंस आ चुकी थी। देयर वाज अ लॉन्ग टाइम जब से वहाँ डेमोक्रेसी चली आ रही थी, लेकिन दे वर नॉट वेरी पॉपुलेटेड कंट्रीज, एंड वहाँ पे लिटरेसी लेवल भी बहुत हाई था। आउटसाइड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट कहीं पर ये इस तरह के इलेक्शंस तब तक नहीं हुए थे। सो एट दैट टाइम देयर वर 17 crore eligible voters who had to elect about 3,200 MLAs. अलग अलग जो विधानसभा थे स्टेट्स में उनके भी तो इलेक्शंस होने थे, तो 3,200 MLAs को इलेक्ट किया जा रहा था। 489 मेंबर्स, अभी ये जो 543 हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये नंबर भी बढ़ता रहता है, तो 543 अभी इलेक्शंस होते हैं MPs के लोकसभा के, तब ये जो नंबर था 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। एंड इस 17 crore एलिजिबल वोटर्स में से ओनली 15% वर लिटरेट। इलेक्शन कमीशन को कुछ नए तरीके निकालने पड़े। दे हैड टू ट्रेन 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस। सो दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। So many voters, so many constituencies, so it was not going to be easy. It was not just the size of the country and the electoral that made this election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in poor and illiterate country. Many had commented at that time that this is not going to be a successful exercise. Universal adult franchise, many thought that India had committed a mistake by giving voting rights to everyone, especially the illiterate or the women, because उस समय यूरोप में भी women को voting rights नहीं मिले थे। India, right from the beginning, we had given voting rights to women and everyone, whether poor or literate or illiterate, everyone. By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. In this context, India's experiment with the universal adult franchise appeared very bold and risky. Media ने criticize किया, and Indian editor called it the biggest gamble in history. Organizer जो एक magazine है, popular magazine, that described Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India। के बाद में बताएंगे जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने ये universal adult franchise इंडिया में वो क्यों लेकर आए। British member of the Indian civil service, he claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. He said there is no meaning, जिसको समझ ही नहीं है, जो illiterate है उसके लिए ये वोट डालने का उनको अधिकार देना सही नहीं है। Okay.
But Nehru and the freedom fighters and Congress in particular, even Nehru, Gandhi, he was no more, but they had believed that the Indian public was mature enough to cast votes, even though they didn't know how to read and write. लेकिन उनको इतनी समझ है कि वो वोट डाल सके, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स उनके पास होनी चाहिए. The elections had to be postponed twice. जो इलेक्शन 1950 में इनके ज़्यादा तक हो जाएंगे, वो इलेक्शंस 1952 जनवरी 1952 में ये इलेक्शंस कंप्लीट हो पाए. ये वो डेट है जब ज़्यादा जगह पे वोटिंग हो पाई. सो 1952 इलेक्शंस इज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952. तो अक्टूबर 1951 से ये शुरू हुआ था एंड फरवरी 1952 वोटिंग हुई. जनवरी 1952 में लास्ट वोटिंग, उसके बाद काउंटिंग एंड ऑल दैट टुक सम टाइम. एंड फरवरी 1952 our election, first election got over. It took 6 months of campaigning, polling and voting, accounting to be completed. Elections were competitive. ये पहला इलेक्शन था, फिर भी ये इलेक्शंस competitive थे. ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटली डोमिनेट किया, उन्हें कोई चैलेंज नहीं मिली. अगर हम एवरेज निकालें तो पर सीट हम देखते हैं कि 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा. आज की डेट में तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, बट उस समय के लिए काफ़ी है कि हर सीट पर 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली थे. दैट मीन्स इट वाज कॉम्पिटिटिव इनफ. एंड ऐसा नहीं था कि जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो कैंडिडेट्स थे वो आसानी से जीत गए. ओके, उसमें परसेंटेज में भी ये बात निकल कर आएगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेट तो किया, लेकिन उनको जो वोट्स मिले वो शेयर उनका काफ़ी कम था. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शंस. फर्स्ट इलेक्शंस जो हमारे हुए. दिस इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क, क्योंकि तब तक किसी पुअर एंड इलिटरेट कंट्री में इलेक्शंस नहीं हुए थे. कोई कंट्री उसमें किसी ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की थी. यूरोप में ज़्यादातर थी डेमोक्रेसी. So election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was important not just for India but for the world, क्योंकि entire world was watching कि क्या एक poor country भी ये elections इस तरह से करा सकते हैं. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. तो जहाँ पर education नहीं है या poverty है, वहाँ पर भी इलेक्शंस हो सकते हैं, सक्सेसफुली हो सकते हैं. ये इंडियन का फर्स्ट इलेक्शन 1952 का दैट हैड प्रूव्ड. इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट डज नॉट मीन कि कहीं पर कोई पुअर कंट्री है तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है. एंड इंडिया शोड द वे. एंड द फरवरी 1952 का जो इलेक्शन था दैट प्रूव्ड दैट इवन पुअर एंड इलिटरेट कंट्रीज लाइक इंडिया could hold elections and democracy there could also become successful. कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जो इलेक्शन थे वो तीनों ही डोमिनेट किए. दे वन लॉट ऑफ सीट्स एंड द फर्स्ट लोकसभा यहाँ पर उन्होंने 364 सीट्स दे वन आउट ऑफ 489 सीट्स. So this is the Congress dominance. 364 out of 489. इन्हें कई चीज़ों का बेनिफिट मिला. First, people identified and it was true that Congress was the party which had got us independence. ज़्यादातर जितने भी उस समय पॉपुलर लीडर्स थे they were part of the Congress. Congress had got us independence. इसका बेनिफिट उन्हें मिला. And they had the structure and the organization which was there in all parts of India. It was they had the advantage to some extent, we can say. तो लोकसभा के उसमें 489 सीट्स में से they won 364 seats. They won 74% of the seats, but they only won 45% of votes. उन्हें वोटिंग परसेंटेज जो है वो केवल 45% वोट्स मिले. सीट्स उन्हें 74% मिली. And you know how this happens in India. This is result because of the first past the post system. अगर proportional representation होता तो उन्हें 45% सीट्स ही मिलती. 489 का 45% सीट्स ही उन्हें मिलती. क्योंकि इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट दैट इज ओनली फॉर प्रेसिडेंशियल एंड राज्यसभा इलेक्शंस.
in popular elections like legislative assembly, विधान सभा या लोकसभा के इलेक्शंस या पंचायती जो सिस्टम है विलेज पंचायत और फॉर दैट मैटर नगर पालिका नगर निगम, यहाँ पे ये जो इलेक्शंस है पॉपुलर इलेक्शन जहाँ पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एंड इसमें हमेशा ये है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, कितने मिलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, द सेकेंड पार्टी आफ्टर कांग्रेस जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिले, दिस वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, वन ओनली 16 seats. I'm sorry, I think I mentioned the wrong party here. So it was not the Socialist Party, but the Communist Party. Okay? So Communist Party, they won 16 seats and they were second. So the first and second, you can see the difference. The first getting 364 seats and the second getting only 16 seats. The state elections were held with the Lok Sabha elections. इन्हीं के साथ स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी लोक सभा के इलेक्शंस एक ही साथ हुए थे। The Congress scored big victory in these elections as well. It won a majority of seats in all these states except Travancore and Cochin. वहाँ पर वो नहीं जीत पाए। ट्रेवनकोर का इशू भी था, Madras and Odisha. Finally, even in these states, the Congress formed the government. So the party ruled all over the country at the national and the state level. As expected, Jawaharlal Nehru became the prime minister after the first general election. Interim prime minister तो थे, उसके बाद उनकी पार्टी जीत गई, तो फिर वो prime minister बने. But look at the electoral map on the province on the previous page would give us a sense of the dominance of the Congress during the period. तो ये है पीरियड 1952 से लेकर 1962। ओके, तो दिस पीरियड दिस इज द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। उसके बाद भी है, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे खत्म हो गया, बट यहाँ पर उनको लिटरली कोई चैलेंज नहीं मिल रहा था। सो हियर वी सी दैट इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शन held in 57 and 62 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats. So ये 3 elections 52 and each paper election was 57. So these 3 elections 52, 57 and 62 party almost getting the same result. They maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the total seats. None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress. In the state assembly elections, the Congress did not get majority in a few cases. और ये केरला का केस significant है 1957 जब वहाँ पर CPI की कोalition गवर्नमेंट बन गई। तो केरला हम देखते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन में बन गई थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन बाद में यहाँ पर CPI का कब्जा हो गया, काफ़ी लंबे समय से है वहाँ पर। ओके, the extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. ये जो स्ट्रेंथ जो दिख रही है कि इतनी सीट्स कैसे मिल रहा है, वोट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम भी कुछ ऐसा था जहाँ पर कांग्रेस को इसका फायदा हो रहा था। कांग्रेस वोटेड 45% votes but managed to get 74% of these seats. Socialist Party, the second largest party in terms of votes. Okay, the votes seats के terms में, that is why I was getting confused. Seats second अगर हम देखें तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिले 16 seats, लेकिन अगर वोट्स देखें तो वोट्स कांग्रेस के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे 10% वोट्स, और ये मिले थे सोशलिस्ट पार्टी को, विच कुड ओनली मैनेज 3% ऑफ दी सीट्स। तो ज़्यादा वोट्स लाने के बावजूद भी कम सीट्स उनकी निकल रही थी, बट क्योंकि जो वोट्स डिवाइड हो जाते हैं, कई सारे इश्यूज हैं इसमें कि कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वोट्स थोड़े डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर चांसेस कम हो जाती हैं। ओके,
And here we will also learn about the different parties. We learned about communist victory in Kerala 1957 में कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा केरला में, एंड वहाँ पर EMS नमोद्रीपाद जो कि थे CPI के लीडर, वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने. The Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. पार्टी को 60 सीट्स मिली आउट ऑफ 126 सीट्स. उनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनी, लेकिन और पार्टीज को मिलाकर वहाँ पर कोalition की सरकार बन गई विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट्स. और पार्टी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट्स का उन्हें सपोर्ट मिला और उनकी गवर्नमेंट बन गई. ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो 60 मिल ही चुके थे, तो 3 ही 4 और सीट्स चाहिए थे, वो इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिल गया. EMS नमोद्रीपाद, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी, to form the ministry. For the first time in the world, the Communist Party government came to power through democratic elections. बाकी रशिया, चाइना, क्यूबा, पोलैंड, जहाँ भी कम्युनिज्म बढ़ा, सोशलिज्म बढ़ा, वहाँ पर फोर्स या फिर कोई और तरीका उन्होंने अपनाया. डेमोक्रेटिक तरीके से केरला की पहली सरकार कम्युनिस्ट की सरकार बनी. On losing power in the state, the Congress Party began a liberation struggle against the elected government. The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. The communists claimed that the agitation was led by vested interests and religious organizations. In 1959, the Congress government at the centre dismissed the communist government in Kerala under Article 356 in the Constitution. फिर एक सिलसिला बन गया कि जहाँ पर कांग्रेस डायरेक्टली नहीं जीत पाई, फिर उन्होंने आर्टिकल 356 का सहारा लेना शुरू कर दिया. आर्टिकल 356 में क्या है, यू नो दिस आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंशियल रूल इसमें हो जाता है कि अगर स्टेट का गवर्नर रिपोर्ट बनाकर सेंटर में भेजता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो फिर सेंटर वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसे डिसमिस कर देती है एंड वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है. मतलब गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर रूल करने लगता है, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स एवरीवन वो हट जाते हैं. तो ये आर्टिकल 357 एक वेपन की तरह यूज हुआ एंड कांग्रेस जहाँ जहाँ की सरकार नहीं बना पाती थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट देखा गया कि वो क्रिएट करते थे. और दीज आर एलिगेशंस अगेंस्ट कांग्रेस एंड ऐसा CPI का मानना है कि उन्होंने वहाँ पर केरला में सिचुएशन को ख़राब किया और फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाकर उनकी सरकार को हटा दिया गया. दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वाज वाइडली साइटेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स. इन इस इमरजेंसी पावर का आर्टिकल 357 का दुरुपयोग हुआ एंड केरला की गवर्नमेंट को हटा दिया गया. नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हम देखते हैं कि एक पार्टी का डोमिनेंस भी यूनिक चीज़ थी, बाकी वर्ल्ड में देखने को मिलता है. तो वहाँ पर नॉट थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे कि होता है वर्ल्ड पार्टी रूल में, अभी हम देखते हैं चाइना में है, बट दैट इज़ नॉट थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दैट इज़ बाय फोर्स. थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस कांग्रेस ने यहाँ पे रूल अपना what distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. यहाँ पे थोड़ा PRI का केस देखेंगे in the next class that how in different parts of the world single party rule करती हैं by force या फिर बाकी unfair means से elections होते रहते हैं, but those elections can't be called free and fair. Here different details about different parties have been given. The Communist Party of India का details that we learned and the Socialist Party. ये Socialist Party से ही कई सारी पार्टीज बाद में हुई हैं. The समाजवादी पार्टी, the जनता दल, all these parties, राम मनोहर लोहिया वगैरह वो सब इसी पार्टी से इनका है और इनकी आइडियोलॉजी इन पार्टीज की जो आजकल है सेम है. भारतीय जनसंघ जो अब BJP बन चुका है, स्वतंत्र पार्टी. सो विल बी लर्निंग अबाउट फ्यू अदर parties also at that time, and also we'll be learning about the dominance, the era of one party dominance, and Congress as a social and ideological, क्या social जो ideological coalition we'll be learning about that.
Okay, thank you very much.